So digital security is the collective term that describe resource employed to protect your online identity, data and other assets. यानी ऑनलाइन सिस्टम में आपसे जुड़ी हुई हर चीज को कवर कर रही है. These tools include web services, antivirus, software, smartphone, SIM card, biometrics, and secured personal devices. In other words, digital security is the process used to protect your online identity. ऑनलाइन आइडेंटिटी ही आपका मेन गोल है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर. अगर मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी ही ऑनलाइन कोई डुप्लीकेट कर देता है तो बेसिकली जो काम वो कर रहा है वो बेसिकली आपके नाम पे चढ़ जाएगा. यानी जैसे आपका मान लीजिए फेसबुक अकाउंट हैक हो गया तो वट एवर डाटा शुड बी posted on that account, you are the responsible for that. There are different type of digital securities are antivirus software. Viruses delivered through a malware and other malicious system infect your data and bring your system to a screeching halt. A good antivirus program not only detect and clean out this infection, but also keep out suspicious program and isolate likely threats. Content update firewall. This tool monitor web traffic, identify authorized user, block unauthorized access, and if current enough, will even protect against next generation viruses. Firewall have been around for years, and many cybersecurity experts dismiss them as obsolete. However, state-of-the-art version is potentially useful tool for keeping out unwanted users. Then proxies. Proxies are digital security tools that bridge the gap between user and the internet. Using filtering rules in line with an organization's IT policy, proxy block dangerous website and leverage an authentication system that can control access and monitor uses. Remote monitoring software. Remote monitoring allow the data security team to collect information, diagnose problem, and oversee all the application and hardware from a remote location. Remote monitoring provides flexibility and convenience, enable administrator to resolve any issue anytime, anywhere. Now, vulnerability scanner. This tool detect, evaluate, and manage the weak spot in your organization system. Vulnerability scanner not only identify flaw but also prioritize them to help you organize your countermeasures. IT security team can use scanner for both web application and internal system. Then IAM, Identity and Access Management. बहुत सारी देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टीम्स इस टाइप की बिल्डअप होती हैं जो इस तरीके का काम करती हैं. हर एक टीम का एक अलग रोल है और अल्टीमेटली गोल सभी का यही है टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी और आपके रिस्क को किसी तरीके से कम किया जाए. Identity and access management ensure that right people and job role in your organization can access the tool they need to their jobs. आपने कोई काम करने के लिए टूल का यूज किया या किसी सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो आप ही राइट पर्सन है, आपके अलावा कोई और नहीं है. तो पहली बात तो ये आइडेंटिटी मैनेज कर रहा है. आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस सिस्टम एनेबल योर ऑर्गेनाइजेशन to manage employee apps without logging into each app as an administrator. Identity and access management system enable your organization to manage a range of identities including people, software and hardware like robotics and IoT device. Importance of identity and access management team. दो रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंस है. पहला सिक्योरिटी.
Traditional security often has one point of failure, the password. If user password is breached, or worse yet, the email address of their password recovery, your organization become vulnerable to attack. IAM service narrow the point of failure and backstop them with a tool to catch mistake when they are made. तो सबसे पहला काम आपके लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है. दूसरा, प्रोडक्टिविटी. Once you log on your main IAM portal, your employee no longer has to worry about having the right password or right access level to perform their duty. Not only does every employee get access to the perfect suite of tools of their job, their access can be managed a group of role instead of individually. प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वंस यू आर इन द सिस्टम विद दिस, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने सही पासवर्ड, आपको पासवर्ड सही क्या है या आपको क्या राइट्स, एक्सेस सही राइट्स मिले हैं. इट विल मैनेज फॉर यू. तो ऑब्वियसली बात है, इट विल reduce the workload. Then how does IAM work? Identity management solution generally perform two tasks. पहला, it confirm that user software or hardware is the who they say they are by authenticating their credential against a database. जैसे मैंने बताया, सबसे पहला काम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यही एसेस करना है कि आइडेंटिटी वही है कि नहीं है. मैं सिस्टम पे लॉगिन हुआ तो सब मुझे समझ जाएंगे कि यार ये राइट पर्सन ही लॉगिन हुआ. अगर कोई और मेरे आईडी पासवर्ड जान गया तो ऑब्वियसली जब वो लॉगिन होता है तो आउटसाइडर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन को लगेगा कि मैं लॉगिन हूँ, जबकि ऐसा नहीं है. तो IAM cloud identity tools are more secure and flexible than traditional user and password solution. Second point is the identity access management system grant only appropriate level of access. एक तो सही आदमी को पहचानने में हेल्प करता है, तो दूसरा उसको उतना ही सही आदमी को भी सही राइट्स देता है. हो सकता है मैं सही आदमी पर मेरे पास मैंने ऐसे राइट एक्सेस कर लिए जो कि मेरे नहीं होने चाहिए थे और उनकी वजह से मैंने सिक्योरिटी को ब्रीच किया. Instead of a username and password allowing access to the entire software suite, IAM allow for narrow slices of access to be portion out, editor, viewer, and commenter in a content management system. There is a figure of that. Entity, enter यूजरनेम और पासवर्ड. कोई पर्सन ने यूजरनेम और पासवर्ड डाला, यूजरनेम और पासवर्ड डाटा से ऑथेंटिकेट हुए, ऐप एक्सेस और अप्रूव और डिनाइड. अगर कोई ऐप की एक्सेस है तो उसे अप्रूव होगी या डिनाइड करेगी, ये तो ऑथेंटिकेशन के अंदर होगा. ऑथराइजेशन, एंटिटी असाइन एडिटर प्रिविलेज. एडिटर का उसे प्रिविलेज है तो लॉगिन इनटू द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, देन मेक चेंजेस टू द कंटेंट, क्योंकि उसे एडिटर का ही प्रिविलेज है. एडमिन का प्रिविलेज नहीं है, तो एडमिन से रिलेटेड काम, चेंज यूजर अकाउंट एंड न्यू पासवर्ड, जो एडमिन कर सकता है उस एडिटर को, क्योंकि वो किस तरीके से लॉगिन हुआ है, एडिटर के फॉर्म में लॉगिन हुआ है, तो वो नहीं कर सकता. What does IAM do? IAM system provide the core functionality. Manage user identities. IAM system can be the sole directory to use to create, modify, and delete user, or it may integrate with one or more other directories and synchronize with them. Identity and access management can also create new identities for users who need to specialize type of access to an organization tool. Then provisioning and de-provisioning users. Specifically which tool and access level, चाहे वो एडिटर का हो, जैसे अभी एग्जांपल दिया, व्यूअर का हो और एडमिनिस्ट्रेटर का हो, टू ग्रांट अ यूजर इज अ कॉल्ड प्रोविजनिंग. IAM tool allow IT department to provision user by a role
डिपार्टमेंट और अदर ग्रुपिंग इन कंसल्टेशन विद द मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। अब किसको क्या रोल मिलना है, ये तो ऑब्वियसली बात है, सीनियर टीम में डिसाइड करती है। Since it is a time consuming to specify each individual access to every resource, identity management system enable provision via policies defined based on the role-based access controls. Users are assigned one or more role, usually based on job action, and IAM system automatically grant the action, providing also work in reverse to avoid security risk presented by the ex-employee retaining access to the system. IAM allows you to quickly remove their access.